So, Assalamu alaikum, class. We are gonna study today. It's physics. Hamza, Ali, Abasi. The chapter that we're gonna study today is electromagnetic induction. I'm really sorry about my writing, but apart from it, I guess it's under you can understand it a bit. I don't have much practice over this writing board. Well, starting section E in O-level physics. In O-level physics that we have, it's section D. I'm not starting it actually. I'm going on to the topic directly, which is electromagnetic induction. In this topic, we'll study about how electromagnetic induction, why we can have EMF by electromagnetic induction. We'll study about the laws. We'll study about the Lenz law, the ideal current, and then we'll move towards an AC generator and a DC generator. So, starting with some simpler, you can say, saying, we know that whenever there is a there's a current, there is a magnetic field around it. Whenever the charges are flowing through a wire, there is a magnetic field around those charges. It's mean like flowing of charges and electric and EMF and magnetic field, they have a relationship. Whenever there is a flow of charge, there is a EMF, there is a magnetic field around it. So can we make EMF using magnetic field? Well, this kind of stuff first came like this. I guess it was some kind of story of Faraday. I'm not sure. I guess that he passed a magnet over a coil of wire and he saw a deflection on a galvanometer. Well, coming directly to the topic, because it's just a revision right now. I have a magnet and there's a magnetic field around it. We know that the magnetic field is from north to south. Out from the north, we represent like this, and into the south. And it's all widely spread over an area. There's a whole region of magnetic field. It's like this. If I put a compass, it will be in these places, it will be pointing like this. I've attached a coil of wire, you can say a solenoid, with a galvanometer. Right now it's at 0. Okay, well, we know whenever the current is flowing through a wire, there is a magnetic field around it. Is it possible to change the magnetic field and have current? Because having current means magnetism, then change of magnetism should have some current and some kind of EMF. तो बिल्कुल कुछ ऐसे यहाँ पर होता है. The same thing is happening here. When I move the magnet towards the wire, the magnetic field lines cuts the coil. This magnetism causes the electrons in the wire to move. When the electrons move, it's mean charge is flowing. A magnetic field is induced in the coil as well. Well, not coming to that part, initial part पे रहते हैं. जब मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाता हूँ, तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म इस कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से मूव करते हैं. व्हेन आई ब्रिंग द मैग्नेट नियर टू द कॉइल, the magnetism of the magnet influences the electron which moves them. अगर इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, if the electrons are moving, it's mean moving of electron is working. Actually, I'm working on the electron. If I'm working on the electron, it's mean I'm generating an EMF. I'm inducing an EMF. So it's mean EMF will be induced. Okay. When I bring the coil near,
or when I bring the magnet near, there is an EMF induced in the coil. So we know now that whenever there is a magnetic field, change of magnetic field, there is an induced EMF. What I'm doing now is मैंने मैग्नेट लिया और एक कॉइल के सामने रख दिया. आई एम नॉट मूविंग इट, मैंने सिर्फ रख दिया है. दिस इज स्टेशनरी. स्टेशनरी है, कॉइल मूव नहीं कर रहा, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक कांस्टेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और वो एक जगह पर हैं. दे आर नॉट मूविंग. इफ दे आर नॉट मूविंग, नो वर्क इज डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, नो EMF induced. As I move the magnet towards the coil such that it is the magnetic field lines are cutting the coil, the magnetic field is from north to south. When I'm bringing the magnet near to the coil, actually as I move it near, the magnetism is increasing. See, it's the magnetic field जो है वो दूर जाके वीक हो जाती है, करीब जाके स्ट्रांग हो जाएगी. ज़ाहिर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है, एक रेंज है. Whereas when I'm bringing the magnet near to the coil, there is a change of magnetic field within the coil. The change of magnetic field induces EMF in the coil. I can say that this will move toward this side, just relative, it will move toward this side and EMF will be induced. So whenever there is a change of magnetic field, EMF is induced. This is what electromagnetic induction. Change of magnetic flux linkage. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आपका मतलब किस तरीके से आप कट कर रहे हैं कॉइल को. चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज induces EMF in the wire slash coil. Now मेरे पास जो है वो एक मैग्नेट है लाइक दिस. दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. दो पोल्स के एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ. बीच में वायर लेकर आता हूँ और मैं वायर को ऊपर लेकर जाता हूँ. आई एम अप्लाइंग फोर्स अपवर्ड्स. फोर्स मेरी अपवर्ड है. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मेरी वो कहाँ है, नॉर्थ से साउथ ट्रैवल कर रही है. एज आई मूव द वायर अपवर्ड्स, मेरी वायर क्या कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है. ज़ाहिर है जो दूसरे दूर के रीजन होंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, अपर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगी. तो एज आई मूव द वायर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द वायर एंड आई एम कटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जब ऐसा हो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा हूँ तो वायर के इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगे. मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद दे विल मूव, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उनकी मूवमेंट चेंज होगी. इसका मतलब देयर विल बी सम वर्क डन. ज़ाहिर है चेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, मूव कर रहे हैं वो. आई एम डूइंग सम वर्क डन ऑन देम. तो वो जो वर्क डन है बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन बेसिस, जो आपके चार्जेस के बेसिस पर हो रहा है, उसे आप EMF कहते हैं. तो एक EMF इंड्यूस हो जाएगा विद इन द coil. Now we'll talk about the direction of EMF. Direction of EMF induced. I know when I'm cutting the magnetic field, EMF induce हो रहा है वायर में चूँकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ EMF निकालना है. तो डायरेक्शन ऑफ EMF निकालने के लिए we use